Welcome back to our lecture series of metric spaces. In this lecture, we will study a proposition, and in this proposition, we will construct a bounded metric with the help of a given metric. And this will be the usual method to construct a bounded metric. So, let me start this proposition, and it is proposition 1.2.3, and it says let x comma d be a metric space. The moment we say this ordered pair is metric space, that is this x is a non-empty set and this d is a metric defined on this x. Okay, and किसी भी मैप को metric बोलने का meaning है that this is following all the four properties. Now we are define d prime from x time x to r. Okay, this is another metric by d prime of x comma y is equal to d of x comma y over 1 plus d of x comma y, and this is for x and y in x. Okay, then this is the conclusion. Then d prime is a metric on x, also the value of this d prime x comma y, this is always less than, strictly less than 1 for all x and y belongs to x. The word bounded now I think is clear, क्योंकि ये d प्राइम, जैसे ये d एक मेट्रिक है, then d of x comma y will be always greater than equals to 0, and hence something over 1 plus something is always strictly less than 1. Okay, इसकी minimum value 0 हो सकती है, so we will have 0 again, तो that will be strictly less than 1. अगर 0 के अलावा कोई भी नॉन जीरो वैल्यू है, that is the positive value है, then any positive value we have this one. Okay, that is a over 1 plus a is always strictly less than a for any a positive. Okay, so this is I think understood, and this way we are calling it a bounded metric. Okay, now let me prove that this d prime construct a metric. So let me write the proof first, and proof को हम वही जनरल आइडिया से ही प्रूफ करने वाले हैं. So let me write first this conclusion. Okay, so since d is a metric on x, therefore you can say therefore d of x comma y is always greater than equals to 0 for all x comma y in x. Okay, अगर ये greater than 0 है, then d of x comma y over 1 plus d of x comma y will be strictly less than 1, and this implies that d prime, this is nothing but d prime of x comma y is less than 1 for all x and y are in x. So this is about the boundedness. So what we can say, the metric, अभी हमने वैसे प्रूफ करना है, बट स्टिल आई एम यूजिंग दिस वर्ड metric, d prime is bounded. Okay, now come to this part कि ये metric किस तरीके से फॉर्म कर रहा है. So first of all we need to identify कि ये हमेशा नॉन नेगेटिव ही रहेगा. ठीक है, since we have that d of x comma y is always greater than equals to 0, अगर ये greater than equals to 0 है, then therefore we have that 1 plus d of x comma y, that is also greater than equals to, I can say strictly greater than 0 for all
x and y in x. अगर ये greater than equals to 0 strictly greater than 0 है और ये greater than equals to 0 है, so we can use this term as a denominator. So what I'm trying to define that, so देखिए, हमने अगर यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 लिखते तो इट मे बी पॉसिबल कि हम उसको डिनोमिनेटर की फॉर्म में यूज़ नहीं कर पाएँगे। सो लुक एट द आइडिया बिहाइंड डिफाइनिंग 1 प्लस डी ऑफ एक्स कॉमा वाई सो दैट इट विल बी स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0, ओके? एंड जैसे ही स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 0 है, देन दिस इज़ मीनिंगफुल। व्हाट इज़ दैट? दिस इज़ 1 प्लस डी ऑफ x comma y. This is also greater than equals to 0 for all x and y in x, and this is nothing but d prime x comma y that is greater than equals to 0 for all x and y in अपर केस एक्स, ओके? देखिए, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैंने फर्स्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि हमें ये जो थिंग्स है जो डिफाइंड है, जैसे यहाँ पर ये हमें पता है कि ये नॉन नेगेटिव है, बट वी नीड टू मेंशन टू यूज सम काइंड ऑफ कंसेप्ट जहाँ से हमें पता चले कि हाँ दिस इज़ नॉन नेगेटिव। अदरवाइज डायरेक्टली हम ऐसा नहीं लिख पाएंगे कि हाँ दिस इज़ डिफाइंड एंड दिस विल बी नॉन नेगेटिव, ओके? हमें ऐसी हैबिट में नहीं लानी है। Second one is about d 0. So let d prime of x comma y is equal to 0. So this implies from this definition we have d of x comma y over, अगर हम शुरुआत से ये अपनी हैबिट में रखेंगे तो एग्ज़ाम तक हमारी बहुत प्रैक्टिस हो जाएगी और उसमें फिर हमें अलग से कुछ नहीं करने की रिक्वायरमेंट है, ओके? बस थोड़ा सा हमें इसमें एक्टिवनेस दिखानी है। नाउ दिस विल बी इक्वल्स टू डी ऑफ x comma y is equals to 0, so I can write this as if and only if, okay? Now d of x comma y will be 0 if and only if x is equals to y. ये क्यों लिख पा रहे हैं? Since d is a metric, okay? Now यही हमने प्रूफ करना था कि d प्राइम x comma y अगर 0 है, then we have to have that x is equal to y, okay? Now come to the third, and of course this is the quite simple part while discussing the metric. So we have that d prime of x comma y that is equals to d of x comma y over 1 plus d of x comma y, and we know d is a metric, so we have that d of y comma x over 1 plus d of y comma x. ये हम क्यों लिख पा रहे हैं? Since d is metric, so therefore d of x comma y must be equals to d of y comma x for all x comma y in x, okay? This is the reason behind it, and from the definition this must be equals to d prime x comma y, and this is true for all x and y in uppercase x. Now this is the crucial part, which is the triangle inequality for the distance function, okay? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी हम ट्राइंगल इनक्लूड की बात करेंगे या फिर फोर्थ पॉइंट पर आएंगे, हमेशा एक अलग से हमें पॉइंट डिफाइन करना है एक्सेप्ट दी गिवन इनपुट। जैसे अगर फंक्शंस गिवन हो एफ और जी तो एक एच सपोज कर लो, एक्स और वाई गिवन है तो जेड सपोज कर लो। ऑलवेज स्टार्ट योर फोर्थ पार्ट विद दिस सपोजिशन, ओके?